Hello, everyone, and welcome to a very special episode of Cadets Leadership Podcast. Today, we are honored to have a phenomenal personality, someone whose journey blends dedication, discipline, academic brilliance, and inspiring leadership. Please join me in welcoming Dr. Aanieetaa Vaissnava, a Thank you. distinguished educationist, leader, author, and mentor, and a shining example of excellence. Thank Ma'am, you. Thank you. Ma'am, your journey is often described as inspiring and remarkable. You're studying in Kendra Vidyalaya, Puram to receiving prestigious awards. Your life reflects continuous learning and growth. Before we dive into questions, could you briefly tell our cadets what kept you motivated throughout these years? I think it is the learning of and the teaching given by my parents. Never give up. And they have given me a very beautiful childhood where they never stopped me from doing anything. So, my parents, my mom and my daddy, both have played a very, very important role in making me what I am today. So, they are like next to God for me. Thank you. Let's explore your rich academic journey, which is truly extraordinary. Commerce in classes 11th and 12th, literature graduation from Jesus and Mary College, MBA in HR and Finance, PhD in Hindi Literature, diplomas in Russian, Urdu, Management, Linguistics, and Translation. Ma'am, this is rare and truly inspiring. What inspired you to pursue such diverse fields? Right from my childhood, my father insisted and focused more on the language skills, speaking skills. So he always developed a habit in all four of us. We are four siblings to read a lot. So newspapers, Reader Digest, news magazine. And he used to ask us to read news also, the way we used to hear in Doordarshan and All India Radio. So right from my childhood, when I used to hear news in All India Radio and Doordarshan, so I used to compete with them itself. So I used to say that I used to tell this to my father that one day even I can be a newsreader like them. So and I made that dream come true by becoming a newsreader in All India Radio and Doordarshan. So it was all continuous support and the guidance and the motivation of my father and my mother, where they insisted that your language, your expression, your communication skills actually talks about your personality. It also speaks about your background. So you should be very, very particular the choice of words that you have while speaking to anybody and the kind of language that you sentence that you frame. So I think again, it is all my parents, but of course my teachers played a very, very important role. My English teacher, till I am in touch, who taught me English in school, and Mrs. Harriet Raghunathan, an American lady who taught me English in college. I think what she taught me in 3 years, I couldn't learn that in 12 years. So, whole credit goes to her when I passed out from the school. The accent, American accent, or a British accent, or maybe how you have to do the voice modulation. So all those things she really emphasized, and that also gave me an opportunity to participate in different kind of debate, declamation, and poetry recitation competitions where I represented Delhi University, and I won first prize in Inter University Pan India. So it is all my gurus, my parents, constant support. Yes, definitely, I never gave up. So if I would have given it up and I would have stopped, then I don't think I would have done what I have done today. Even if I talk about the language skills. Now we would like, Thank you. Ma'am, now we would like to ask some questions as a rapid fire round. Sure. What was your favorite subject in your school life? Accountancy. Till date, it is my favorite subject. Why? I love doing accounts. There is no reason for why, but accountancy is one subject where I cannot stop. Even if you'll give me 30 questions, I won't mind doing those 30 questions together. Ma'am, NCC camp, which you will never forget.
The last camp, which was in Delhi Kent, and it was a very rigorous camp because we were supposed to get up early in the morning at 4 o'clock, and then we used to feel so hungry. We were given those भीगे हुए चना जो अभी मैंने आप लोगों के लिए शुरू किए हैं, तो वो चने हमको इतने अच्छे लगते थे, लगता था वो कोई हलवा है। भूख बहुत लगती थी। And then after a cross country, here I don't see that kind of a rigorous physical efforts being taken given to you by your say your teachers, but we used to do 10-kilometer rigorous cross country early in the morning, and again we used to feel very hungry, very hungry. And then after we used to get only 15 minutes for doing our breakfast, and then we were supposed to change our uniform, khaki uniform, within those 10 minutes, along with that belt and polished shoes. So sometimes it was almost 1.5 months training program, because they were selecting the best NCC cadet from all the states, and then they would have, by the time what they announced, that we will be selecting one best cadet from each state, and they'll be representing in the Republic Day parade. That was a very big thing for all of us. So we used to cry a lot also. Sometimes we used to feel homesick, and then we had to mug up our general knowledge, because a person like me who never ever wanted to lose any competition, always wanted to come first. So we used to feel so tired. We had to study NCC. There was a proper syllabus for NCC also. We were supposed to do the training program also, and of course washing our clothes and managing everything within a stipulated time period. That was the biggest challenge, but I think that has made me. It was tough, very challenging, because ultimately my aim was that I must represent Delhi. If I would have lost it, then I think I would have felt very demotivated. So that was a motivation part, and that was a challenging part of my life, and that 1.5 months time changed my mindset. Your secret is stress buster? My secret? A stress buster? Stress buster. Listening to music, dancing along with myself, and gardening. One teacher who changed your life? One of my professor in Jesus and Mary College, whom I'm still in touch, she told me a very harsh truth about myself. I was excelling in sports. By the time I played basketball junior Indian team also, I was aiming to be the next PT Usha of this country, because my 100-meter timings were very good. I was the best athlete of Delhi state. And since I was a B certificate holder of NCC, so I was very relaxed that anyhow, anybody will take me in army, and hoping to clear my UPSC and into the sports. I was seeing my career, myself into sports through army. But then one day, that professor of mine, she called me in her room in college, and she said that, Aanieetaa, I know that you're very good in sports. You are the sports president of the college. But let me tell you, there's a lot of politics in our country in the field of sports. You'll be very frustrated. We all discuss about you. You have an excellent command over English and Hindi. So you pursue something in the field of language, and I'm sure you'll be very happy and successful. And I think that what she said has come out true, because without language, you can't be a good teacher, you can't be a good administrator, you can't be a principal, you can't be a director, because everywhere you need that expression, that language, command over the language, whether it's Hindi or English. So she has really changed. She's kind of a change maker of my life, where I started understanding myself, and I changed my path. Ma'am, if not an educator, then what would you be? Of course, I wanted to be an IAS or IPS, but law is also something I'm very much interested in. So I cleared my entrance in Delhi University. So I would have been lawyer or
maybe an IAS. Reason? Uh, there's no reason. Right from my childhood, I used to argue a lot. I used to ask a lot of questions to my parents, to my uncle and aunt, or even if my mother used to send to somebody's house. So I used to ask questions only. So sometimes they used to get fed up. Even in my class, I never allowed any teacher till class 12 to go on the second topic if I have not understood that topic. I never used to hesitate in asking a question. And then I used to tell my classmates that you don't have the guts to ask questions. So I used to ask questions without any hesitation because I was always very confident and always had this clarity that you should not bother about what others are thinking. You should know what you are actually sitting for. You must get it. So I had this clarity right from my childhood. From grade 1 itself, I was a monitor till from grade 1 to grade 12. So monitor itself gives you a lot of confidence, and it makes you very bold also. So I think that is one thing which I feel is something which has made me. Ma'am, which was your favorite country? Among the countries which I have traveled, Yes. because I can only compare if I have, I liked Uganda a lot. It's very beautiful in East Africa. By what? A lot of natural beauty, and I like nature a lot. Like if I compare Uganda with Singapore, so I don't like Singapore because Uganda has natural beauty, nature, plantation. You get all kind of different flowers which you will get from different part of the world in Uganda. So I like that natural beauty of Uganda country. One And the more. people of Uganda are, though they are black, but they are very, very humble. They are very respectful towards the Indians, especially, and they love to adopt the Indian culture and the Indian customs also. So this is also one thing which made me very emotional about because of that they used to show so much of respect to us. So I have a very soft corner for the black Africans. I really respect them. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Now, ma'am, I would like to tell you that our cadets of Sainik School would like to ask some question to you. Surely. Jayandati. Yeah, very good question for me. See, because I'm from the army background, my father was in the army. Uh, Earlier, it was not allowed uh, for the girls to take admission in Sainik school or in NDA. So when I was of your age, I used to literally sometimes used to fight with my father and used to had debate on this topic that why only the boys are allowed to take admission in Sainik school, even for that matter NDA. When girls are allowed to participate in NCC, and when I was in KVS, I've studied from Kendriya Vidyalaya. Every year, Kendriya Vidyalaya, New Delhi, Arkipuram Secretariat, which is one of the best KVS in Delhi. So every year, 10th class topper used to take admission in DPS Arkipuram. By that time, we were not knowing what is DPS is all about. So gradually, I came to know that DPS is like one of the best private schools in India. Uh, that motivated me actually. And relating to your questions, as you asked for the army background, right? Can you repeat your question? Why Sainik school? So when I realized that there is something called DPS, which is one of the best brand,
So I used to think that I should always be best of the institution. Unfortunately, I became a teacher, to be very honest. I never wanted to be a teacher. I was into electronic media, print media, and then when I became teacher, because it is all destiny, I wasn't very happy about. But then I said, ki if I've landed in this particular pool, I should be in the best. So first I got through in CGM, Convent of Jesus and Mary, which is one of the top school in Delhi for the girls, and there you have to teach Hindi and English medium. All the whole cream crowd of Delhi, their children, girls, they study there. After teaching in CGM, then I realized no, it's very easy to control girls, so I should be in a co-ed. Again, DPS was the brand. Then I got selected in DPS. Then I thought I should go abroad. Then I got selected for abroad DPS. I became a teacher in Indonesia, then vice principal, then director in Uganda. I always used to think that being from the army background, I do not have any experience of handling the Sainik school, residential Sainik school, because the system would be different, because this is what I used to hear from my brother. So this was a dream of mine actually, to get selected in Sainik school. And I think it is all God's blessings that out of the whole lot, respectable chairperson ma'am and vice chairman of this particular school, they believed in me, my credentials, my qualification. They believed in what I said, and that's how I'm here today. So I'm very thankful to God for that. Zen ma'am, my Jai. name is Pratha from Zen ma'am, my name is Etawah from class 7T. My question is, मैम आपने हिंदी से PhD की है, फिर भी आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? उसका श्रेय पूरी तरह से फिर मैं कहूँगी कि मेरे माता-पिता को जाता है, क्योंकि मैं बहुत ही इस बात पर गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गाँव गोटनी में मैं पैदा हुई और एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, जहाँ पर हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और हिंदी के प्रति एक लगाव, एक प्रेम, और हिंदी भाषा को बहुत ही परिष्कृत रूप में बोलने की एक शिक्षा, एक परंपरा हमारे घर में बचपन से ही हमें मिली है। तो इसलिए हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में हम पढ़े, और जो फोर्सेस का एक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर आपको उस रैंक के पूरे क्राउड में अक्सर आप अंग्रेजी में बातचीत करते हैं, और एम्फोसाइज भी उस पर करते हैं पेरेंट्स, तो उस वजह से अंग्रेजी भी बेहतर होती चली गई। थैंक यू। Jai ma'am, जैन, my name is Masik, and my question is, which, if you had to choose only one, sports, NCC, or debate, which one would you choose and why? I will select sports, because sports makes you mentally and physically fit. Yes. Thank you, ma'am. Jai ma'am, Jai. my name is Ashutosh Kumar. My question is, why did you choose Sainik School Etawah? I had no choice. I have not selected Sainik School. Sainik School Etawah has selected me actually. So this was the only school where I gave my interview. As I just said few minutes before, it was my dream to work in Sainik School, and with God's grace, I have been chosen by the management. I mean, there was no question of place actually, because after working, yes, I think your question somewhere down the line is there, like from Delhi coming to Etawah. Okay. So, after working at so many different places, I have seen best of the life, different countries, different cities in India also. So now by this age, what I have understood
it is not the place which matters. I'm always happy with myself wherever I am. So it does not make any difference whether I'm sitting in a 5 star or I'm sitting in a jhopdi or I'm sitting in a city or in a village. I should be happy in doing what I'm doing. So that makes me happy. I've seen all kind of luxury. So I have understood that that's not very important. Up to some extent, it is important, but ultimately, what makes you happy is that what you are doing. You're doing it willingly or you're doing it forcefully. If you're doing it forcefully, then you will not be happy, right? So as I said, that this was my dream to be in a Sainik school. So wherever Sainik school will be, whichever it might be in Gujarat or maybe in Rajasthan, I won't have mind. Ultimately, it should be Sainik school, and it is a Sainik school. Jain ma'am, Jain. myself, Katrishal Tiwari. My question is, ma'am, you have led schools in Indonesia, Nepal, and many more countries. What differences did you notice in students across these countries? There's a lot of difference. There is a lot of difference because of the geographical situations, and also because of the country. The different country people, foreigners are very different from the Indians. That is one. It can be plus and minus both. But of course, two different people or two different children from two different background cannot be same, even if they are neighbors or even if they are siblings. So similarly, one thing that I feel that I have learned, especially from the Japanese and the Americans, I have learned this thing from them, that you should never get into a dirty politics and never unnecessarily talk ill about anybody, and always greet and treat people with respect and smile. Even a foreigners, even if any stranger will be walking on the road, so they always used to smile and greet good morning. And this is what we have learned even in the army background. In the army environment also, we were supposed to be wishing everybody, even when we used to go out in the campus for a evening walk. So this is one thing which I have learned, especially from Japanese. I have learned to be more focused towards your goal and be very specific, be very straight, and you should be goal oriented without being here and there. So a lot of learning has happened, and more organized. You should be punctual. You should have the better time management, and that's how you can achieve a lot of things in those 24 hours. Jain ma'am, Jen. my name is Adarsh. Ma'am, how was your school life? My school life was beautiful. I had a lot of fun. I used to bunk my class in a very decent manner, taking permission from my teachers, because I was a very obedient and respectful student, being in the student council, being a sports captain, then being the school captain. So I always used to show due respect to my teachers. But sometimes the whole class used to take the advantage of this. Sometimes used to feel our eco classes very boring. Sometimes we used to feel our Hindi classes very boring. So they used to, boys sitting at the back, they used to share a chit to me that, Aanieetaa, class is becoming very boring. Why don't you just tell ma'am that we have to do practice of basketball? So all those things used to happen through me. So I was very loyal to my classmates. But yes, I was very, very particular about doing my homework and classwork, and was always very particular about my image in the mind of my teachers. And I was very cautious about the fact that no teacher in PTM should say that your daughter is ill mannered,
she does not show respect, she does not speak properly, or she does not gel well with the classmates. So these were few things which were there in my mind right from my childhood. But I was also equally naughty in a different manner. I won't deny the fact. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, my question is that how did you, how was your experience being a newsreader at Doordarshan? Again, I would say that, as I said, I used to tell this to my father as a child. When I used to listen to them, I used to watch them reading news in the Doordarshan or in All India Radio, Vivid Bharati. कृष्ण कुमार भार्गव जी का नाम मुझे लगता है कुछ लोगों ने सुना होगा, जो ऑल इंडिया रेडियो के बहुत ही सीनियर न्यूज़ रीडर रहे. उनको मैं बचपन में सुनती थी, और जब ऑल इंडिया रेडियो में मेरा सिलेक्शन हुआ और कृष्ण कुमार भार्गव जी के साथ बैठना एक न्यूज़ रीडर की तरह, वो एक सपने का साकार होने जैसा था, कभी सोचा नहीं था. In the similar manner, when I cleared the audition, voice test, written test of Doordarshan newsreader, so in the makeup room, when I remember Shubhendru Kundra, English newsreader. He was very handsome, and his pronunciation was so good. So I always used to watch. He used to give 9 o'clock English news. He used to read, and because of his personality, I was very, very attracted. And because of that, I was too much influenced, because sometimes it does happen. If you have a good and smart teacher, you do get influenced. So Shubhendru Kundra was very, very handsome newsreader, and his pronunciation was so good. So I used to fight with my elder brother that nobody, because we had only one television at home. So I said, nobody will disturb at 9 o'clock. I only have to watch English news, as Daddy has said that I have to focus on that. But my aim used to watch Subhendu Kundra, English news reader. So I think he motivated me to be a great news reader. I used to copy him. And after my training, first day when I was sitting in the makeup room, Shubhendru Kundra was sitting next to me. That was again something which was like, I felt that I have made impossible possible, because that time there were only two channels, DD1 and DD2. So it wasn't an easy task to get into Doordarshan like this. So again, I really felt very proud of myself at that particular moment, but that was not the end of my aim. जैन मैम, जैन मैम, माय क्वेश्चन इज, मैम जब आप डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल बने अनंतनाग में, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? डीपीएस अनंतनाग को एक प्रिंसिपल की तरह शुरू करने में जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, आई थिंक यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टेबल डांस टीचर नहीं है. सर कहाँ पर हैं? सर को बुला लीजिए आप, क्योंकि वो उसके साक्षी हैं. आज से 21 साल पहले वो स्कूल मैंने शुरू किया था एज अ फाउंडर प्रिंसिपल. ज़्यादा हो गया समय. डीपीएस अनंतनाग को शुरू करना, अनंतनाग के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा. आप इसको टेलीकास्ट भी करेंगे. इतना ही कह सकती हूँ कि कश्मीर द फाइल जो फिल्म है, आप सबने शायद देखी होगी. Yes, ma'am. उस लाइफ को मैंने जिया है, और मिलिटेंसी का गढ़ है. मेरा सिलेक्शन हुआ डीपीएस शुरू करने के लिए, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था. इतना बड़ा चैलेंज था कि अगर उसमें रोजमर्रा के जीवन में आने वाले चुनौतियों की मैं चर्चा करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. और उसके बावजूद भी आपका डटे रहना, क्योंकि आप
कि अपने जो सिद्धांत हैं कि आप छोड़कर भाग नहीं सकते मैदान को, और आपने जिन बच्चों के लिए विद्यालय खोला, जिन बच्चों के माता पिता ने मुझ पे यकीन करके अपने बच्चों को दूसरे प्राइवेट स्कूल से निकाल कर डीपीएस अनंतनाग में डाला, उनके सामने पीठ दिखाना मेरी फितरत नहीं थी। तो उन चुनौतियों ने मुझे चट्टान बना दिया, जहां मैंने मौत को भी अनुभव किया जिंदा रहते हुए, लेकिन फिर भी मुझे अपने बच्चों के सामने डेली मॉर्निंग असेंबली में जब वो लाइन में अपनी क्लास में जाते थे तो मुस्कुराना भी था और उनको ये एहसास भी कराना था कि सब कुछ ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा इस पर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हमारी वर्तमान स्थितियों से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और कश्मीर में किस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन ईश्वर ने साथ दिया। मेरे चेयरमैन रिस्पेक्टेबल लेट श्री अशोक चंद्रा जी, जो डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन थे, मेरे गुरु रहे, जिन्होंने मुझे चेयरमैन होकर 250 स्कूल के पूरे वर्ल्ड के चेयरमैन होकर उन्होंने कभी भी मेरे फोन को निरुत्तर नहीं किया, और उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा था कि आपको सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए भेज रहे हैं और हर समय मैं आपके साथ हूँ। ऐसा चेयरमैन ना आज तक मैंने देखा है और ना मुझे लगता है कभी होगा। और वो इलाहाबाद के यूपी के बहुत सीनियर आईएएस थे, गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन थे, मैथ्स में उन्होंने एमएससी की थी। जितनी सादगी के साथ उनका जीवन था, सिद्धांतवादी थे, सच्चाई पर चलते थे, और जितना डर था उनके प्रति लोगों में, उन्होंने उतनी ही स्नेह से मुझे एक बच्चे की तरह उंगली पकड़ के आज यहाँ पहुंचाया है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने सीखा है उसका पूरा श्रेय मैं अपने चेयरमैन, मेरे गुरु श्री अशोक चंद्रा जी को देती हूँ, क्योंकि उनके जैसा चेयरमैन अगर ना होता तो शायद मैं कभी प्रिंसिपल नहीं बन पाती। क्योंकि आपके सीनियर जब आप में यकीन करते हैं तो आप में जो ताकत आती है, फिर आप पहाड़ों को भी पार करके आगे बढ़ जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। जय हिंद मैम, जय माय नेम इज कैडेट चंद्रशेखर। माय क्वेश्चन इज, मैम आपने बहुत सारी कंट्रियों में पढ़ा है, पर आखिरकार आपको इंडिया में पढ़ाना अच्छा क्यों लगा? एक चीज मुझे अपने जीवन यात्रा के अनुभव से समझ आई है कि नियति ने सारी चीजें तय की हैं, आपको कब कहाँ जाना है। आप कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि आपके अंतर मन में जो चीजें होती हैं, नियति आपको वैसे ही चलाती है। मैं विदेश में जरूर रही, लेकिन विदेश कभी मुझे आकर्षित नहीं कर पाया। विदेश में हमेशा रह के हमने अपने भारत की याद बहुत आती है, और ये हर पल ये महसूस किया कि जब मैं दूसरे देश में थी तब अपनी भारतीय संस्कृति, परंपराएं, त्योहार ऐसे लगते हैं कि जैसे इससे बड़ा कोई उत्सव हो नहीं सकता। तो कभी भी मेरा मन इस बात से खुश नहीं रहा कि मैं किसी दूसरे देश में जाके बस जाऊं। हमेशा एक मन छटपटाता था कि अपने देश में आना है, अपने देश के लोगों के बीच में, अपने देश की वो जो सूखे पत्ते हैं, अपने देश में जो लोगों की एक सादगी है, आपस में लड़ना झगड़ना, मिलना जुलना, वो चीजें मैं बहुत मिस करती थी। तो कभी भी मुझे इस बात से वो नहीं हुआ कि मैं एक विदेश में रह के विदेशी बन जाऊं। भारत आने की लालसा हमेशा रही, इसलिए ईश्वर मुझे भारत वापस ले आया। Jane ma'am, जय Jane ma'am, myself Darun K. Manoj from class 7C. My question is, in which place or country did you face more difficulties as a principal, ma'am? I won't say difficulties as such, because I have always enjoyed challenges. Even I won't say any kind of a struggle. Challenges definitely are there in the administration, but in Uganda there was an incident which I never
I always remember that we were having a board examination, and one of our biology teacher was deported. So I had to call the minister and I had to stop the flight. That was the most challenging this thing, and I realized the power of being a principal of an Indian school in the foreign country, where everybody stood by me and they stopped the flight. And even that particular teacher of mine was supposed had something in his passport, sorry, but then anyhow they respected my decision, and because of the board examination they allowed him. So it was the biggest challenge, but I also realized that how much they respect the educationist. So you all understand that it is next to possible to stop the flight, and the person who has been deported by a country cannot be reverted back, right? So I think that I always remember and always be thankful to the immigration department, and even the ambassador, because we have to directly connect with the ambassador, Indian embassy. So ambassador really helped me. Jain ma'am, my name is Khed Aisman Singh. My question is, when you become a principal for the first time, what was your biggest challenge? I didn't know ABC of principal. I got selected as a principal. Similarly, the way we get selected to become a teacher, we don't know anything about it, right? So it was the biggest fear the day chairman announced that you have been selected finally. So I was under a lot of stress. I had a lot of fear in my mind that how I'm going to do it, what I have to do as a principal, how will I make the timetable, how will I guide the teachers, how will I give the training to them, how we are going to have the classes. So a lot of questions were there in my mind, and I worked very hard in consultation with my parent school principal of DPS Vasant Kunj. But gradually, after a few months, as a team, we worked as a team. So I was able to achieve that also. Then it became very normal. Jai ma'am, my name Jai. is Kait Devesh Shukla. Ma'am, my question is that how did you motivate the students who lack or lost confidence in their life, in their school life? See, if I have to motivate somebody, so it depends. I always have one-to-one conversation with a person, whether a student or an adult, because in general, it is very easy to say this sentence that you should never lose hope. We do lose, right? But then one thing that I have realized in life, that there is always a hope. Even if you're hopeless, then also there is a hope. Because this is what I learned from my parents, कि सूरज एक दिन छिपता है और अंधेरा भी होता है, और अंधेरा फिर खत्म होता है, फिर सूरज निकलता है. तो जो ये प्रकृति का नियम है, अंधेरे के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधेरा, तो आपके जीवन की जो भी स्थिति है वो कभी भी शाश्वत नहीं रह सकती, वो परमानेंट नहीं हो सकती है. अगर अभी आप रो रहे हैं तो अगले पल सुख के पल भी आ ही जाएंगे. अगर आप ये सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें कुछ भी परमानेंट नहीं लगता है. जब हमें कुछ भी परमानेंट नहीं है तो दुखी होने की जरूरत क्या है. तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला अपने जहन में बिठाया हुआ है, और इसी सिंपल फॉर्मूले पर मैं काम करती हूँ जब मुझे किसी की काउंसलिंग करनी होती है, कि आप किस चीज से आहत हैं. और बहुत बार ये भी बहुत जरूरी है कि आपका टूटना, आपका गिरना, आपका रोना, और बहुत बार आपका अपमान होना भी बहुत जरूरी होता है. अगर आप खुद को कभी भी अपमानित महसूस नहीं कर पाएंगे अपनी किसी गलती की वजह से, कभी आप सम्मान के महत्व को नहीं समझेंगे. जिस तरह से कि अगर अभी लाइट चली जाती है तो हम फिर जब लाइट आती है अंधेरे के बाद उस उजाले के महत्व को समझ पाते हैं ना.
जब तक हमें चोट नहीं लगेगी तब तक हमें दर्द के खत्म होने का जो एक मीठा एहसास है वो महसूस नहीं होता, है ना? या तो मुझे लगता है कि जो सवाल आप अभी कर रहे हैं कि मैं मोटिवेट कैसे करती हूँ, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपनी लाइफ के बहुत एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर इस तरह के सिचुएशन से आदमी निकलकर बाहर आकर खड़ा हो सकता है, मुस्कुरा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने चारों तरफ देखिए, जिसको ईश्वर ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंख दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिया है और सुनने के लिए कान दिए हैं, मुझसे लगता है उससे ज्यादा धनवान तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। आपका सब कुछ छिन जाए फिर भी आपसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। ये आप तब समझेंगे जब आप उससे बात करेंगे जिसके पास आंखें ना हो, जिसके पास बोलने की क्षमता ना हो, जिसके पास पैर ना हो, जिसके पास हाथ ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, और अगर ये चीजें जैसे मुझे भी मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने बताई हैं बचपन से, जिसको मैंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, तो कभी भी मैं जीवन में दुखी नहीं होती एक लंबे समय के लिए, या मुझे कभी भी मैं डिमोरलाइज नहीं होती हूँ। मैं कभी भी अपने किसी भी डिसीजन के लिए किसी दूसरे को अपराधी नहीं समझती हूँ। जो डिसीजन मैं लेती हूँ उस पर कभी मुझे अफसोस नहीं होता। Jain ma'am, my name is Cadet Harsi Singh. My question is, what habit helped you maintain excellence in so many areas? What has helped me? Sorry, come again. What habit Helped me? helped you excellence in so many areas? Sorry, I'm not getting his question. Which habit made you excellence in so many? Okay, excellence in so many areas. Okay. I'm very focused, straight, and I don't get distracted easily. And and the better, that really helps you to do better time management. जय मैम, जय। मेरा नाम अभ्युदय सिंह है। मैं आपसे आपका सवाल नाम? अभ्युदय सिंह। अभ्युदय सिंह। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आपने एनसीसी ज्वाइन की थी तो आपको उसके डेली रूटीन में सबसे खराब चीज क्या लगती थी? मतलब जो आपको थका देती हो या आपको अच्छा ना लगता हो वो चीज करना। भागना। भागते ही रहते थे, भागते ही रहते थे। थैंक यू सुबह मैम। उठो भागो, शाम को भागो, दोपहर को भागो, भागते ही रहना। एनसीसी की ड्रेस को पहनने के लिए भी भागना, एक टाइम में भागना, लंच के लिए भागना, ब्रेकफास्ट के लिए भागना, डिनर के लिए भागना, भागते ही रहना। बट उस भागने ने मुझे बहुत ऊंचा भगा दिया। सो आई एम थैंकफुल टू एनसीसी। थैंक यू मैम। It has taught me there is no comfort zone in life. So never be in comfort zone. थैंक यू। तो इसलिए आज भी भाग ही रही हूँ और इनसे ज्यादा तेज भाग सकती हूँ। जो सब यहाँ बैठे हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हैं सारे, ज्यादातर। Jain ma'am, my name is Cadet Rohit. My question is, what is the secret of your fitness? भागना। चलते रहना, भागना, पैरों का चलना और दिमाग का चलना, अच्छी चीजों के लिए, एंड मेडिटेशन और अध्यात्म। जो बचपन से हमको अध्यात्म की शिक्षा मिली है वो मुझे लगता है सबसे खूबसूरत है। पूजा पाठ और ईश्वर में आस्था। और ईश्वर में आस्था का मतलब होता है ऊपर वाले में आस्था। जब आप ऊपर वाले में आस्था रखते हैं तो खुद पे आस्था रखते हैं। आपको खुद पे यकीन होता है तो आप हमेशा खुश रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आपको डांटने के बाद भी खुश रहती हूँ क्योंकि वो डांटना मेरा कर्तव्य है।
Jain ma'am, my Jain. name is Cadet Pratyush. Ma'am, my question is, what are the main problems you face in your NCC period? Problem? There was no problem. As I just replied, no. What irritates you? What irritates you actually makes you. That's a fact. If I'll ask you or I ask teachers, taking class, checking the notebooks, even I'm a teacher, so it used to really irritate me. Let me tell you, putting bindi in all the notebooks throughout, doing the correction properly, but that has made me. So what irritates you? Not eating very delicious food, eating what should I say? I stopped eating delicious food actually. I started focusing on eating things which are good for my health. उनमें टेस्ट नहीं होता है ना, सैलेड में टेस्ट नहीं होता. पिछले 25 सालों से एक जूस पी रही हूँ जो मैं बहुत बार अपने टीचर्स को बताती हूँ, जिसमें कि साबुत पूरा नींबू होता है, नींबू का छिलका भी होता है, 4 आंवले होते हैं, उसमें अदरक होता है, उसमें कच्ची हल्दी होती है, उसमें पालक भी होता है, कभी उसमें खीरा, उसमें पुदीना, धनिया. तो ये सारी चीजें रोज पीना टेस्ट को तो नहीं भाता होगा ना, जीभ के टेस्ट को तो, पर वो मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. तो इससे आज तक मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी. तो मुझे लगता है कि वही मेरी सेहत का राज है कि आपको जो बनाती हैं चीजें उसमें स्वाद नहीं होता, वो कड़वी होती हैं. जिस तरह से कि कड़वी बातें ही आपको सही रास्ते पे लेके जाती हैं, तो कड़वी चीजें आपकी सेहत को भी सही बनाती हैं. ये मेरे जीवन का अनुभव है. जैन मैम, जैन. मेरा नाम हर्ष कुशवाहा है. मैं आपसे आपका नाम हर्ष कुशवाहा. 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 मैम, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ. मैम, जब आपने एनसीसी ज्वाइन की थी तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता था और आपकी एनसीसी लाइफ जर्नी कैसी थी? मुझे सबसे अच्छा लगता था एमसी बनना, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जहाँ पर हम कल्चरल इवेंट की पूरी कंपेयरिंग करते हैं, और जीके में पार्टिसिपेट करना. वो 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जहाँ पे हर चीज़ में हाथ खड़ा करके बताएं कि यस यस सर आई नो द आंसर. तो एक तो ये, और किसी भी प्रोग्राम की कंपेयरिंग करना, जिसको हम मास्टर ऑफ सेरेमनी कहते हैं, जो भी इसको कंपेयरिंग करता है एनसीसी में. तो 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी. उसके बाद मुझे क्रॉस कंट्री अच्छी लगने लगी, क्योंकि भागते भागते इतना भागे कि फिर भागने को ही जीवन का एक वो बना लिया. तो फिर मुझे अब क्रॉस कंट्री भी बहुत अच्छी लगती है, अभी भी अच्छी लगती है. एनसीसी लाइफ मैंने कहा ना, बहुत अच्छी, क्योंकि उस समय नहीं एहसास होता है. उस समय तो लगता है कि हम किसी कंफर्ट जोन में है ही नहीं. आज मैं ये कह सकती हूँ कि एनसीसी ने मुझे बनाया है. जैन मैम, मेरा नाम अंश कुमार है. मेरा प्रश्न यह है कि एक कैडेट के जीवन में किन नैतिक मूल्य का होना जरूरी है? अनुशासन. अनुशासन है तो सब कुछ है, क्योंकि अगर आपने अपने मन को अनुशासित कर लिया तो सब कुछ अनुशासित हो जाता है. सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, तो आपके हाथ, पैर, आंख, कान सब अनुशासित हो जाते हैं, जीभ अनुशासित हो जाती है ना. Then you will be an achiever. Ma'am, now we would like to move towards our respected teacher to ask some questions from you. Surely. I'll love to answer. Good evening, ma'am. My name is Manish Gupta. I am a teacher, but I
like to be a student, and that's why I'm always trying to learn from my seniors and from my gurus. I would like to ask a question. What do you believe, what qualities do you believe are essential in a good teacher and a good student? What qualities do I observe in a good teacher Yes. while I select? No, ma'am, just I want to be a good teacher, but I want to know what qualities do you believe are essential in a good teacher? Okay. Please sit. Thank you. See, one simple answer of mine can be that whatever qualities that you all have, I observe those qualities, and that is the reason you all are here. Firstly, you have given answer of your question by yourself that good teacher has to be a good student always. Without being a good student, you can't be a good teacher. अगर हम ये समझते हैं कि हमको सब कुछ आता है, तो उससे बड़ी नासमझी नहीं हो सकती. Because at every stage, as you all know, you all are respectable educationists, you all are experienced teachers, highly qualified. Education field at the national and international level is rapidly changing. And each subject, every person has to upgrade the knowledge. Every principal has to upgrade the knowledge, right? As I said in the beginning also, when I got selected, I didn't know even a P of principal, right? Even now, I don't know P of principal in Sainik school. The challenges are different, right? So similarly, I am also a student. I'm learning, and I just keep saying to the teachers, and I have no hesitation in saying so. So the first thing is when I interview a teacher, I try to assess the thought process of an individual teacher by asking certain questions, right? And of course, I will not deny the fact that teaching profession is very, very challenging for a teacher. You have to be very resilient. You have to be mentally and physically very fit also, which people generally do not understand, do not realize. It is a very, very demanding profession because you are a nanny of a child, you are a tutor of a child, you are a doctor of a child, you are a cook of a child, you are a counselor of a child, then you are a storyteller of a child. As a teacher, you have to play all the roles, which is not possible, but you are doing it. You're doing it. Maybe world, maybe Indian society or outside country, I would say that somewhere down the line, they respect teachers a lot. This is my biggest dilemma also, and I feel the pain also that one day people in this society should understand how much labor a teacher has to go through to make them great citizen by teaching them different subjects. You're always on your toes, always. Even while teaching maths, how you're sitting, how you're walking, how you're talking. Every teacher, for that matter, मतलब वो हमारे अंदर घुला हुआ है. वो कभी कभी हम सोचते होंगे कि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि इनको वैल्यू एजुकेशन देते हैं. So one thing is there, what question you have asked, you have answered yourself. We have to be a good student always. एक अच्छे गुरु में भारतीय संस्कृति के संदर्भ में मैं बात कहूंगी, संस्कारों का होना अति आवश्यक है. जो मैंने आज के दौर में महसूस किया है कि हमें लगता है कि आधुनिकता विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को की नकल करने में है, तो ऐसा मैं नहीं मानती. और जो मैं देख रही हूँ कि कुछ हद तक एक गुरु समाज भी उस ओर मुड़ रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत गलत है. क्योंकि जो सत्य है, जो सही है, जो नैतिक मूल्य हैं, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे. Whatever is the Indian value system had been, will always remain. So vulgarity,
dirty politics, shortcuts should not be followed by the teachers. Because whatever said and done, we are role models for them. And especially in the residential schools, actually we are their parent, which they might not realize now. Maybe now buddy parent concept, which is there only in our school, let me tell you. It was khurafati dimag of mine. I have that innovative keeda in my mind to do something or the other for the children in the school. So बडी पेरेंट का जो कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि किसी सैनिक स्कूल में होगा. ये मेरे दिमाग की एक उपज थी कि ऐसा होना चाहिए. Because why I am saying so with so much of confidence, when I was talking yesterday with the respectable Brigadier Amit Chatterjee, and I was talking about this concept, so he was very, very excited and happy. And he said that you should share a few ideas so that same can be implemented in other schools as well, right? So as a buddy parent, see here, बड़ी पेरेंट होकर आप इनके माँ और पिता की भूमिका निभा रहे हैं. खाना कैसा बना है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आपका मन कैसा है, किसी ने डांटा तो नहीं, किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, चोट तो नहीं लगी है, कोई बुखार तो नहीं है आपको, आपका होमवर्क हुआ नहीं हुआ. मतलब ये सारी चीजों का इतना समय तो घर में रहने वाली माँ भी नहीं कर पाती हैं. वो भी झिड़क देती हैं, मुझे अभी खाना बनाने दो. ये सच है, मानते हैं आप इस बात को? तो ये रियलाइजेशन इनको यहाँ से निकलने के बाद होगा कि जो यहाँ पर ये टीचर थे, वो टीचर नहीं, वो एक्चुअली हमारे माता पिता थे, और वही तो हैं जिन्होंने मुझे बनाया है. इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ कि इनके प्रति आपकी श्रद्धा, इनके प्रति आपका सम्मान, इनके प्रति आपका प्रेम सबसे ज्यादा होना चाहिए. तभी तो एक कबीर का दोहा ऐसे ही तो प्रसिद्ध नहीं हुआ ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए. कि हे ईश्वर, गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु दोनों साथ में खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके पैर छूऊं? सबसे पहले गुरु के पैर छूऊंगा, क्योंकि उसी ने तो मुझे बताया कि ईश्वर का भी अपना कोई अस्तित्व है ना? तो ये बात मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप इस बात को समझेंगे तो जो आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में फोन उठा के बात करते हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा. राइट? गलत है या सही है? आई थिंक यू गॉट द आंसर. Good evening, ma'am. Good evening. I am Jayalakshmi. I am BGT Home Science. I would like to ask you a question. Ma'am, in your whole journey as an educator, you have you have traveled within India as well as in abroad. So what is your most memorable event that you would like to share with us? Throughout my journey till date, personally and professionally, both will go hand in hand. And please sit. I'm very satisfied and very thankful to God that I could prove myself as a very happy-go-lucky mother with my children. In spite of all kind of challenges, most of the time I was away from them. I was mostly throughout in their life, I was available through video, not physically, which is the biggest pain of my life. But today when I see my children, both my son, the kind of value system that they have, the kind of sanskars that they have, I think God has given me everything. So in my journey, the whole credit of whatever even now I'm doing, mostly it goes to my children for being so cooperative
being so patient and having so much of courage also, could able to empathize, and they could hold like father and both the children together to make me fly high, which is very rare. So I'm the most pampered girl in my house, pampered by all the three males in my house, my husband and both my sons. So I owe everything to them. So this is, I think, the biggest satisfaction of my life. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Rema Paul Chaudhary. I'm TGT English teacher. Ma'am, how are you feeling now sitting over here? Again, it's a very beautiful feeling, sharing with all of you my journey. And, day by day, what I'm realizing, I mean, this is the beautiful state of mind, and this is the beautiful phase of my life as a director principal, where I'm able to connect with each one of you like my child. Sir is sitting here. सर बैठे हैं यहाँ पर, सर उसके साक्षी हैं। सर बहुत सीनियर है मुझसे, और जब मैंने पहली बार स्कूल खोला था 31 साल की थी तब मैं। सर अभी आपकी उम्र क्या होगी? हाँ, 59 के हैं सर। तो जब मैं पहली बार प्रिंसिपल बनी थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि सर उस विद्यालय में वहाँ पे डांस टीचर बनकर आए राजस्थान से, और इन्होंने उस विद्यालय का नाम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तब भी मैं अपने उन टीचर्स को तब उस उम्र में मैं अपने टीचर्स को बेटा बोलती थी, और वो पता नहीं कैसे एक आदत बनी मेरी। और आज भी अब जब बेटा बोलती हूँ, तो आज तो आप लोग ज्यादातर, मेरा बड़ा वाला बेटा 28 साल का हो जाएगा, पीयूष भी मेरे बेटे से छोटे हैं, आप सब उसी उम्र के हैं। तो उस नजरिए से जब मैं आप लोगों को देखती हूँ, तो एक यहाँ पर इस समय जो मुझे खुशी की अनुभूति होती है कि बहुत बार इन सबको डांट लेती हूँ, फिर किसी को, अच्छा, तो वो एक बेटे की जो मेरी कमी है आप लोग पूरी भी करते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे किसी भी टीचर से कोई गिला शिकवा नहीं होता, क्योंकि मेरी अपनी एक उम्र की जो मैच्योरिटी है उसने मुझे सिखा दिया है, और एक जो पेशेंस आपके अंदर आ जाते हैं, और बीइंग अ मदर ऑफ द ग्रोन अप चिल्ड्रन, दैट इज रियली हेल्पिंग मी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे बहुत यकीन है, पहले भी मेरा रेपो अपने टीचर्स के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है। कंफर्ट जोन में मैंने टीचर्स को कभी नहीं रहने दिया, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कंफर्ट जोन में कभी नहीं रहने दिया, और उसने मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं आप लोगों को नहीं रहने देती, बट एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है एक समय के बाद टीचर्स को भी, कि वो उस पल का सत्य होता है जब वो उस चीज को बोलती हैं, उसके बाद वो चिल आउट है, तो वो उनको समझ आ जाता है ना हिमांशु? तो उसको उसी तरह से समझो। तो यहाँ पर वो जो एक रिश्ता बन रहा है आप लोगों के साथ, वो एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता बनने वाला है मेरा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस फेज में बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को उस तरीके से समझ भी पाती हूँ। वो पेशेंस भी आ गए हैं मेरे अंदर, कि अगर कोई उस तरह की शैतानी भी कर रहा है, क्योंकि आप भी तो बच्चे हैं ना, ये भी बच्चे हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं, तो वो पेशेंस आ गए हैं। कभी कभी मैं एनालाइज करती हूँ, अच्छा मेरे अंदर इतने पेशेंस आ गए हैं कि मैं इतना डीपली समझ पा रही हूँ। सो विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई फील। भाई टीचर्स के तो सबके ही सवाल होने चाहिए। अच्छा टीचर ही वो होता है जो सवाल करता है। जय हिंद मैम। मैम मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब कैसे आपने इसकी मतलब किससे आपको इतना स्पिरिचुअल बनाया मैम, ये सारी चीजें मैं आप जानना चाहती हूँ मैम। देखिए पहले तो सिर्फ दिखावा करती थी, क्योंकि वो बचपन में क्या है कि घर में एक पूजा पाठ का माहौल होता है, आरती होना और घंटी बजाना,
तो मम्मी के कहने से हाथ जोड़ लेते थे और आरती ओम जय जगदीश भी गाते थे। स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा 20-22 साल तक। वो सिर्फ एक ऊपरी दिखावा था, जो घर का वातावरण है उसको बिना किसी भावनाओं के मैं निर्वाह कर रही थी। मैं एक बहुत, मुझे सच कहना अच्छा लगता है, मुझे कोई समझ नहीं आता था अध्यात्म क्या होता है। वो शायद एक वैल्यू सिस्टम था जो पेरेंट्स इनकलकेट कर रहे थे, तो समझ आता था कि मंदिर होता है, उसमें मूर्तियां हैं, मंदिर जाना है, व्रत रखना है, लेकिन उसके अंदर कोई आस्था नहीं थी मेरी। लेकिन जब मुझे ईश्वर ने डीपीएस अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर में भेजा, वो एक ऐसा समय था, एक ऐसा पल था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। किसी एक इंसान को अचानक मेले में से उठा के जंगल में फेंक दिया जाए और आपको सरवाइव करना है। मुझे याद है कि मेरे आसपास कुछ नहीं होता था, क्योंकि इस पोजीशन पे आप होते हैं तो आप किससे बात करेंगे। वहां पे आप एक अलग ओहदे में, एक अलग तरह के उसमें रह रहे हैं, तो आप हर किसी से बात भी नहीं कर सकते, और एक अलग तरह का माहौल जम्मू एंड कश्मीर में था। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मुझ पर जो मिलिटेंट्स का अटैक हुआ 1 महीने के बाद ही तो मुझे समझ आया कि मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकती हूँ। तो उस वजह से मैं और अकेली हो गई, क्योंकि वो जो एक माँ का दर्द होता है, एक 2 साल के बच्चे को अपने पास ना रख पाने का और एक 8 साल के बच्चे को ना रख पाने का। आपके पास सारी सुविधाएं हैं लेकिन आपकी मजबूरी है, वो दर्द और वो अकेलापन। फिर वहां पे बर्फ गिरना, जिस बर्फ को देखने के लिए लोग आते थे, तो मैं खिड़की से झांक कर देखती थी, क्योंकि उस समय मैं कैद हो जाती थी अपने घर में। मैं गाड़ी भी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि सड़क पे आप गाड़ी चला नहीं सकते थे। बर्फ जब होती है तो वहां छुट्टियां हो जाती हैं। उस इतने बड़े घर में आप जेल में कैदी की तरह रह रहे थे। आप ना किसी से बात कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। तब मुझे लगता था कि लोग इस बर्फ को देखने के लिए आते क्यों हैं। तब मेरे आंसू आते थे और समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आप किताबों को कितना पढ़ सकते हैं। उस समय किताबों को इतना पढ़ा कि एक बुक लिस्ट बनाने के लिए पूरे एक कमरे को मैंने लाइब्रेरी बना दिया था। पूरे स्कूल की बुक्स में रखती थी और सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स को पढ़ के फिर मैं अपनी बुक लिस्ट फाइनल करती थी। कोई काम ही नहीं था, लेकिन उससे एक आदत ये बन गई कि मुझे हर सब्जेक्ट की एक नॉलेज होने लगी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, ये सारी चीजें। तो वो जो एक घुटन थी, वो जो एक दुख था, वो जो एक तकलीफ थी, वो जीवन में पहली बार आई। अलग रहना, दूर रहना, अकेले रहना सबसे ज्यादा भयानक होता है। उस भयानक पल में वहां पर मुझे जब ईश्वर के प्रति आस्था ने वहां पर जोड़ा, उस घंटी को बजाना, उस दिए को जलाकर उससे बात करना, वहां से मेरे अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई। और उसने मुझे इतना बल दिया कि मैंने उनको पकड़ लिया। क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता और जब आपको ये एहसास हो कि आपके पास सिर्फ ये है, तो उससे बड़ा कोई सहारा नहीं होता। सो दैट वॉज द पॉइंट वेयर आई कंसोल्ड माई सेल्फ. I actually took care of myself because there was nobody to take care of me emotionally, physically, socially. इससे बड़ा कोई फियर नहीं होता, इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। और आपको खुद ही खड़ा होना है। आप बुखार में हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, और वो उस समय ऐसा होता है कि आपकी मेड्स भी चली जाती हैं वहां से। कोरोना टाइप एक हो जाता है, क्योंकि उसको भी तो उसमें छुट्टियों में जाना होगा। आप इतने बड़े महल जैसे घर में आप अकेले हैं। वहां से मेरी अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई और उसने मुझे जो बल दिया, तो उसने मुझे एक इतनी ताकत दी कि आपके साथ वो हमेशा होता है, ये यकीन होने लगा। इसलिए मैं फिर धीरे धीरे अध्यात्म से इतना ज्यादा जुड़ी कि अब वो मेरे जीवन का पर्याय बन गया है। इसलिए हर चीज मैं उस पर छोड़ती हूँ
और उसका उसका साथ हमेशा होता है। तो एक चीज मैंने देखी है कि ना तो मैं बुरा सोच पाती हूँ ना बुरा कर पाती हूँ, और जब बुरा ना सोचते हैं ना करते हैं तो अच्छे रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति, कठिनाइयां आती हैं लेकिन वो सफल बहुत होता है और वो अंदर से खुश बहुत रहता है। दिस इज माई जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट्स माई डेफिनेशन। And I would like to ask a question. As you have said that you never wanted to be a teacher, and by hook or by crook, you have become not only the teacher but also the director and principal of Sainik School Etawah, which was your dream also. Yeah. Now, I would like to know that what are your future plans, and where you see teachers at what place, as you have shared once that you want that in India every teacher should come by their own vehicle. Yeah. So I would like to discuss some more. With God grace, I've got everything in my life, and I have seen my colleagues as a teacher in India struggling to live a standard life as compared to the corporate world. I always used to think that the teacher who is the highest, who is so knowledgeable and who has such high qualification, they do not been paid as per their caliber, what they are contributing towards the society, making the future of this country. We just talk about it, but we actually don't do anything about it. So I always want my teachers to be the richest. They should be paid the best packages in the country. The highest salaries in the country should be of the teacher. And I always want my teachers to be rich, in the sense richness should reflect. They should come in their own car. I mean, that's my dream. And I want to have a kind of a school where everybody look upon, so that I can attract the best brain in that school. How you get the best teachers? When you pay them the best, right? So this is one thing. And secondly, I'm very passionate educationist. This is what I realized. I never wanted to be a teacher, but that was God's planning. उसकी planning के आगे सब कुछ fail है. After becoming a teacher, anyhow, I got into administration. I wanted to be into administration. If had not been teacher, then of course IAS or IPS, maybe army officer. I had been into the administration only. Now I'm into administration in the field of education. So I want to, my ultimate goal is to become the education minister of this country, where I can do certain changes in the field of education. Because जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं. तो मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि इस देश के लिए उस शिक्षा के क्षेत्र में उस कुर्सी पर बैठकर कुछ ऐसा किया जाए जहां पर जो आज की तारीख में हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेजी की चादर इतनी उड़ा दी है कि हमारे बच्चों में इतनी हीन भावना आ गई है, उनका ज्ञान होते हुए भी उन्हें इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर. सो व्हाट वाज देयर इन आवर कंट्री अर्लियर, जो गुरुकुल परंपरा, मैं उसको जीवित करना चाहती हूँ. प्लस जो टीचिंग फेटर्निटी है इस कंट्री में, उसको उसी तरह से लोग सैल्यूट करें जैसे एक आईएएस ऑफिसर को करते हैं. उसके लिए उनकी बेस्ट पैकेजेस और उनकी फैसिलिटीज जो हैं, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, पेंशन, चाहे वो प्राइवेट है या जो भी है. सो दिस इज माय ड्रीम, to change the education system of this country, more focus on the girl child education in a different manner. What we are doing at present, I'm not very happy about it. We are doing just a rote learning. The way earlier our Gurukul system was, the gurus of our early years in the Indian education system, they used to focus a lot on the value system, creating a value-based environment.
that has built up the Indian society. Because of the deterioration in the education system, the society is also going down day by day. And how it is going down? Because of the moral values getting deteriorated. So everything is connected with the education system, and that is the reason this is my goal. I should be able to contribute in a big manner for this country, India, before I die. Ma'am, to share your experience of whole of your journey and